Namaste, welcome to my channel. Today it's the last unit of English, jkbose 11th class. Today I'm going to end the lecture series which I have prepared especially for the student of 11th class. You will get the playlist of this also if you will search 11th class Chanar 2nd. Right, English, so that by this name you will search the playlist of the all lectures of 11th class jkbose, so that this is the last unit, and this is a very important unit. It's a play written by Laurence Houseman, and the name of the play is The New Hangman. So let's start. Before this we will start, I request you to all my viewer, if you have not yet subscribed my channel, please subscribe my channel, share my videos, and also hit the bell icon to turn the notification on, so that you will get the notification of all my videos. Whenever I will upload the video, you will get the notification. Right. एक और अनाउंसमेंट मैं यहाँ करने जा रहा हूँ आज इंग्लिश में भी इसका जो है वो ट्रांसलेशन हो, इसमें हिंदी और उर्दू में भी इसका ट्रांसलेशन होगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए इसके कैरेक्टर्स, इसकी जो है टाइम, प्लेस, और जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। Thank you very much in advance. So let's start. This is one act play. It deals with the hanging of prisoners. All preparation have been made, but the hangman refuses to hang the prisoners who is waiting for his executions, and the governor of the jail asks warders to carry on with the job of hanging, but they refuse to do so, as play is actually a criticism of the capital punishment. ये एक ही एक्ट है, ये एक प्रिजनर है, उससे डील करता है और तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं, लेकिन यहाँ पे जो फांसी देने वाला होता है, जिसको हैंगमैन भी कहते हैं, वो फांसी देने से जेलर को या उस प्रिजनर को रिफ्यूज कर देता है, और वो अपने आप का जो है वो इंतज़ार कर रहा है, जो प्रिजनर है, कि मैं फांसी लग जाऊं। लेकिन यहाँ पे गवर्नर पूछता है वार्नर से कि आप अपने काम को पूरा कीजिएगा, जो आपका मतलब फांसी लगाने का काम है उसको पूरा कीजिएगा, लेकिन वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं इस काम को पूरा नहीं कर सकता हूँ। नतीजा ये निकलता है कि वो वहाँ से चला जाता है और जो प्रिजनर है वो अपनी जो मौत जो है उसको आने वाली होती है वो बचा लेता है अपने आप को। राइट, उसके बाद क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बच जाती है। और ये एक्चुअली एक प्ले है जो क्रिटिसिज्म है कैपिटल पनिशमेंट की। राइट, तो इस पे आपने जो है वो अपना एक किस्म का व्यू देना है, राय देनी है कि कैपिटल जो पनिशमेंट है क्या वो ज़रूरी है या क्या वो नहीं है। मैं यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी राय लेना पसंद करूँगा। तो व्यूअर्स जो भी वीडियो को वॉच करेंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। थैंक यू। चलो हम आगे बढ़ते हैं। Now we will come to the summary. The New Hangman is an interesting play full of humor, but it has a very good theme. The dramatist is very critical of a capital punishment, and the young are the hangman, and the play is his mouthpiece, and the hangman is not prepared to hang the prisoner because he considered this job to be the dirtiest one. The scene
is laid in the office room of the uh, Vansworth prisoner, and it is 7:40 a.m. and as it is a cold winter morning and it is still dark, Mr. Brown is here, the head of the head of the warder, and Mr. Thoms and Mr. Robert are the second and the third warder, respectively. The prisoner is to be hanged at 8 a.m. and he is feeling a bit nervous and he is waiting for his execution. The governor of the jail comes. He is informed about the arrival of the hangman, and he is also told that the deputy uh, sheriff's car has been broken down on the way, so he is unable to come. And he told that he has also asked the warder to hang the prisoner in his absence. The governor also declared that they can't wait for the deputy sheriff. Everything is ready, and the chaplain has also been informed about the execution. Right? The prisoner who is to be hanged has spent a very restless night, and he woke up early and started crying. He was given a breakfast, but he vomited. He was given two strong drinks thereafter, which was a very good drinks, or you call it a very good wine. And the second wine made him feel better. And the governor asked the head warder to give the prisoner awaiting execution the third drink if it is needed for him. In the meantime, the chaplain or the clergyman comes. He is a Goa man. He is a man who is wanna do something for earning the virtues. He is drunk. He has to be party to hanging. He has lost all the sense of decency and so drunk, and he is unwilling to get involved in the hanging of the prisoner. He curses himself for having accepted this post of a prison chaplain, and he agrees that one can't have decency, one can't have the good deed when one hangs a man. Uh, you know, uh, uh, the hangman considered the hanging as the dirtiest job, as it is without all the honor and respect. And he also considered it that it is a very evil deed and there is no respect at all. By refusing to do so, or by refusing to do the hanging in the nick of time, the new hangman saves a man. When no one volunteers to do the hanging, the governor reports the matter to the commissioner, and the prisoner bell continue ringing. And it is 3 minutes to 8, and the commissioner tells the governor that he would seek advice from the Home Office, and the new hangman therefore goes away. That he would not do that. Actually, he can't be detained as he has refused to do the hanging. Right? Let's move forward. There is a large crowd outside the prison. The hangman speaks to them everything that he has happened as a result of his refusals to execute the criminal sentenced by the judge or juries to death. The crowd makes a lot of noise and indulges in, repeated cheering. We are left wondering whether the behavior of the young man is justifiable. A careful and objective assignment or assessment of his conduct to make us feel that hanging a criminal is quite a harsh punishment. Something about the capital
punishment must be done. The earlier something is done about it, the better it would be. The play takes up the humanistic view of the problem of capital punishment. The refusal of the hangman to carry out the execution of the prisoner is quite thought provoking. We must give it due consideration, right? So let's move toward the Urdu and Hindi translation of this play. सो हम इसका जो है हिंदी में भी आज बयान करेंगे क्योंकि हमारी ये लास्ट वीडियो है, तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा. थैंक यू वेरी मच. न्यू हैंगमैन या नया जलाद एक दिलचस्प ड्रामा है. इसका उन्वान या मौजू बहुत अच्छा है, बहुत अजीब भी है. ड्रामा नवेश फांसी की सजा की बहुत नुक्ताचीनी करता है. ड्रामे में नया जलाद ड्रामा नवेश का स्पोक्समैन है. नया जलाद मुहर्रम को फांसी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और नहीं होता है क्योंकि वो इस काम को या इस फेल को बहुत गंदा तस्वर करता है. मुंतजिर वेंसवुड जेल के दफातर के कमरे का है. सुबह के 7:40 हो चुके हैं. चूंकि यह सर्दी के मौसम की तरह सुबह है और अभी अंधेरा है. मिस्टर बाउन मकमा वार्ड है और मिस्टर थॉम्स और मिस्टर रॉबर्ट दूसरा और तीसरा वार्ड है. उसके बाद देखें तो कैद को 8 बजे फांसी पर लटकाया जाना है और वो थोड़ी परेशानी महसूस कर रहा है. वो फांसी लटकाए जाने का इंतजार कर रहा है. जेल का गवर्नर आता है और उसे जलाद के आने की इत्तला दी जाती है और उसको ये भी बताया जाता है कि डिप्टी शरीफ की कार जो है वो खराब हो चुकी है और इसलिए वो आने के काबिल नहीं होगा और उससे वार्ड को बता दिया है या उससे वार्ड को बता दिया कि उसकी गैर हाजिरी में ही जो है कैदी को फांसी दी जानी चाहिए. गवर्नर ये भी ऐलान करता है कि वो डिप्टी शरीफ का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकते. हर चीज तैयार है. जेल के पादरी को भी इत्तला दी जा चुकी है जिसमें कैदी को फांसी दी जानी है. उससे बड़ी बेचैनी से उसका जो है इंतजार है और उसने बड़ी बेचैनी से रात गुजारी है और वो जल्दी ही जाग गया था और उसे जो खाना दिया गया था उसने वो नहीं खाया और उससे जो है वो सुबह ही चलाना शुरू कर दिया. उससे जो ब्रेकफास्ट या नाश्ता दिया गया था उसने उसे उल्टा कर दिया और इसलिए उसे अच्छी शराब पिलाई गई और दी गई है. और दूसरी बार जब पहली बार दी गई तो वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन जब दूसरी बार दी गई तो वो अच्छा महसूस करता है. गवर्नर ने चीफ वार्ड से कहा कि अगर कैदी को तीसरी बार शराब की जरूरत हो तो उसे दी जाए. दरे असना पादरी आ जाता है. वो गॉड का आदमी होता है, वो भगवान का आदमी होता है या वो अल्लाह का आदमी होता है. उससे शराब नोशी जो है उसने की हुई होती है या शराब पी हुई होती है या उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई होती है. उसे फांसी देने में शिरकत करनी है और उसे अच्छाई का एहसास हो जाता है. वो कैदी को फांसी देने का ख्वाहिशमंद नहीं है. वो नहीं चाहता है कि मेरे हाथ से कोई फांसी लग जाए और वो अच्छे कामों की तरफ माइल होना चाहता है. वो जेल का पादरी होने के लिए अपने आप को कोसता है. वो कहता है कि आदमी में अच्छाई नहीं रहती है जब वो किसी शख्स को फांसी देता है, या वो ये कहता है कि जब मैं फांसी दूं तो मेरे दिल में अच्छाई नहीं रहेगी. जलाद
फांसी देने को सबसे ज्यादा गंदा काम समझता है और कहता है कि इससे सारी नेकियां जो है वो खत्म हो जाती है, छल जाती है, क्योंकि इसमें कोई इज्जत वाली बात ही नहीं है और कोई नेकी भी नहीं जो है वो मिलती है। ठीक वक्त पर फांसी देने से इनकार करके जो नया जल्लाद है वो एक शख्स की जान बचा लेता है। जब कोई फांसी देने को तैयार नहीं होता तो गवर्नर कमिश्नर को इस मामले की इत्तला देता है। जेल की घंटी लगातार बजती रहती है। 8 बजने में 3 मिनट रह जाते हैं और कमिश्नर को जो है वो बतलाता है कि वो होम ऑफिस की राय लेगा, इसलिए नया जल्लाद चला जाता है। दरअसल उसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि उसे फांसी देने से इनकार कर दिया है, या उसने फांसी देने से इनकार कर दिया। अब क्या होता है आगे कि जेल के बाहर काफी भीड़ होती है, लोग जमा होते हैं। लोग जो है फांसी का जो है फंदा जो अब कैदी के सर में या कैदी के गर्दन में लगाना जाना है उसका इंतजार कर रहे होते हैं, बहरे हुए होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जल्लाद इन्हें सब कुछ बता देता है कि जो उसे फांसी देने से इनकार करके सब गवर्नर और इसके हमरा हमें हैरानी होगी या इसके माबैन हुआ है, और भीड़ खुश है कि जल्लाद ने कैदी को फांसी देने से भीड़ खुश है कि जल्लाद ने फांसी देने से इनकार कर दिया। राइट। हमें हैरानी होती है कि अगर जल्लाद ठीक वक्त पर ठीक उसने जो है उसको फांसी दी होती तो हकीकत तौर पर ममनू को आने पर हमें महसूस होता कि जल्लाद फांसी देने से जो है वो मतलब से इनकार करके ठीक काम किया है। ये ड्रामा फांसी की सजा को इंसानी नुक्ताचीनी से देखता है। अगर देखा गया है कि कई बार मासूम आदमी को फांसी दी जाती है, जल्लाद का कैदी को फांसी देने से इनकार करके फेल पर गौर करने की जरूरत है। हो सकता है कि कैदी मासूम हो। ड्रामा नवीस इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा है कि फांसी की सजा ममनू करार दी जानी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये यहीं पे खत्म हुआ। हम आगे बढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर्स, पहले इसके क्वेश्चंस और सब कुछ, लेकिन आप वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहिए या बने रहिए। हमारे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये कहता है कि व्हाई डिड द हैंगमैन नॉट नीड एन असिस्टेंट। उसको असिस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, या उसको असिस्टेंट की कोई ज़रूरत क्यों नहीं थी। ये कहता है द हैंगमैन कंसिडर्ड द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ क्रिमिनल एज बैड, cruel, and murderous. He therefore would not hang the prisoner awaiting his executions so that he didn't need an assistant. हैगमैन ने कहा कि ये जो मतलब किसी भी क्रिमिनल को फांसी देना गंदा काम है, जालिम का काम है, और ये कातिल का काम है, या ये कत्ल है, ये जुल्म है और ये गंदा काम है। राइट। या उसने ऐसे बोला कि ये जो है बहुत गंदा फर्ज है, जालिम फर्ज है, और ये जालिम कत्ल है। He therefore would not hang the prisoner, और इस तरह से उसने प्रिजनर को या कैदी को हैंग नहीं किया, कैदी को कत्ल नहीं किया, कैदी को सजा नहीं दी या कैदी को फांसी नहीं चढ़ाया। Awaiting his execution, जो अपनी फांसी का इंतजार कर रहा था। So he didn't need an assistant, तो उसको फिर किसी मददगार की कोई जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Why was the governor angry with the chaplain? चैपलैन किसको बोलते हैं? जो पादरी होता है और जो मतलब जेलर में पादरी होता है। The governor was angry with the chaplain for being drunk. Chaplain ने क्या किया था? उसने जो है वो शराब पी हुई थी
और वो गवर्नर जो था उसके साथ काफ़ी हद तक बुरा सलूक कर रहा था या गुस्से में था। उसकी तरफ जो है वो अपना गुस्सा जो है वो ज़ाहिर कर रहा था। He feels shocked to know that clergyman has drunk, और उसको काफ़ी हद तक ये दुख हुआ ये जानकर कि क्लर्जीमैन या पादरी ने शराब पीकर to escape the performance of his religious duties for the prisoners to be executed। यानी मैं फिर से इसको पढ़ूंगा कि वो ये कहता है कि feel shocked to know that the clergyman has drunk to escape the performance of his religious duties for the prisoner to be executed। तो जो क्लर्जीमैन ने जो है मतलब शराब पी हुई थी, तो इस पे गवर्नर काफ़ी हद तक जो है वो गुस्से में था और वो ये सोच रहा था कि इसने शराब पीकर एक मतलब ये मजहबी फ़र्ज़ को जो है अदा करने से अपने आप को कासिर रखा। वो ये था कि इसने इस प्रिजनर को क्या करना था, एग्जीक्यूट करना था, फांसी देनी थी। राइट, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वॉज द चैपलेन ड्रंक? चैपलेन ने शराब क्यों पी थी? Chaplain was shaken at the thought of getting himself involved in the hanging of the prisoners, and he was unable to get himself ready for his duty. He therefore felt quite upset. He drank wine just to overcome or forget the tension and anxiety. अब इसने क्या किया? चैपलैन जो है यहाँ पे ये सोच रहा था या वो ये सोचकर हिल चुका था कि वो किसी भी कैदी को जो है फांसी देने वाला है। वो उसने अपने आप को इस काबिल बनाया या इस काबिल जो है वो किया कि वो फांसी न दे सके, या उसने अपने आप को नालायक बनाया कि उसने फांसी नहीं देनी है, अपना फर्ज अदा नहीं करना है। राइट, अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा? उसके बाद उसने क्या कहा? उसके बाद उसने ये कहा कि he therefore felt quite upset। अब जबकि उसने फांसी देनी ही नहीं थी, तो वो काफी हद तक जो है वो हैरान रह गया कि मैं फांसी कैसे दूं? If I am not interested in hanging a man, so how can I do that? He was very upset. He was feeling upset. He was quite upset। और उसके बाद उसने क्या किया? He drank wine। तो उसने शराब पी just to overcome, अपने आप को जो है इस काबू से बाहर आने के लिए, और फॉरगेट द टेंशन, और या इस फिक्र और इस एंजाइटी को जो है भूल जाने के लिए। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर कि व्हाट डिड द गवर्नर डू व्हाट डिड द गवर्नर डू व्हेन द हैंगमैन रिफ्यूज्ड टू डू हिज जॉब? गवर्नर ने क्या किया जब हैंगमैन ने अपना काम करने से इनकार कर दिया? ये कहता है he gave an emergency call to the commissioners and informed him about the situation resulting from the hangman's flat refusal to carry out the duty of hanging the prisoner। अब क्या कहता है कि उसने emergency call की कमिश्नर को और इन्फॉर्म कर दिया इस हालात के बारे में कि हैंगमैन ने ये अपना फर्ज पूरा करने से इनकार कर दिया है और वो जो है वो ये कहता है कि वो हैंग नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रीजन डिड द हैंगमैन गिव फॉर नॉट डूइंग हिज ड्यूटी? द हैंगमैन refused to do his duty. He said firmly that he would not hang the criminal under any circumstances. He regarded it as a cruel and murderous job, and he would like either the jury or the prisoner official to do so. Besides, he wanted to save a life on that day. अब क्या कहता है? कहता है कि उसने रिफ्यूज कर दिया अपने फर्ज से, वो हैंग नहीं करना चाहता है किसी भी कैदी को किसी भी सर्कमस्टेंस के तहत। वो ये कहता है कि ये एक जालिमाना और कातलाना
जो है वो काम है, और वो ये जो है वो ये चाहता है कि जूरी या प्रिजनर के जो ऑफिशियल हैं वो खुद ही ये काम करें। और इसके अलावा वो जो है उस दिन जिंदगी को बचाना चाहता है, राइट। हाँ, यहाँ पे why did the क्यों रिफ्यूज कर दिया, राइट। The other refused to do the hangman's work because they would not like to stop out of the field of their own duties. Robert would not do it because his wife was expecting a baby. And the other, Wagner, Thomas, did not do it because it was a part of his duty. It wasn't a part of his duty. And the chaplain was not willing to be evaluated, and the hangman was thus able to prove that his uh, that he was too bad, or his duty of hanging the man was too bad, or a bad job to be performed by others, right। यहाँ पे जो है बाकियों ने भी रिफ्यूज किया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो जो है मतलब किसी का कत्ल करें, या वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी की ड्यूटी करें। रॉबर्ट ने ये इसलिए नहीं किया कि उसकी बीवी को बच्चा था और वो अमीर से थी, और वार्डन थॉम्स ने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने ये सोचा कि ये मेरा काम ही नहीं है। चैपलिन भी इसके खिलाफ था, वो भी इस गंदे काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। हैंगमैन जो था वो उसने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है गंदा काम है, इसलिए दूसरे लोगों ने भी ये करने से इनकार कर दिया, राइट। We have here the other question, that is though the chaplain didn't wish to be present at the hanging of the prisoner, he reprimanded the hangman for not doing his duty. Why do you think he does so? अब कहता है अगरचे चैपलैन ये नहीं चाहता था और उसकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो मौजूद रहे उस फांसी के दौरान जो उस कैदी की होने वाली थी, उसने रेप्रीमैंड किया हैंगमैन को ये ड्यूटी न करने से। आप क्यों सोचते हैं कि उसने ऐसा किया? The chaplain didn't want to be present at the hanging. He drank so that he could carry off the tension within him, though it was not decent for a clergyman to drink. चैपलैन ये नहीं चाहता था कि वो वहां पे मौजूद हो। उसने शराब इसलिए पी क्योंकि वो टेंशन से छुटकारा पाना चाहता था जो उसमें थी, अगरचे ये क्लर्जी मैन को ये जेब नहीं देता है शराब पीना, राइट। बट स्टिल ही रेप्रीमेंड, लेकिन फिर भी उसने रेप्रीमेंड किया हैंगमैन को फॉर नॉट डूइंग हिज ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रिजनर, कि वो अपनी ड्यूटी न करे फांसी लगाने की कैदी को। ही डज सो, वो इसलिए उसने किया ओनली टू ब्लेम हिमसेल्फ, कि वो अपने आप पे इसका ब्लेम ले, फॉर द awkward सिचुएशन, जो वहां पे नागुज़ीर हालात थे, दैट arises फ्रॉम हिज refusal, जो उसके इनकार से खड़े हो गए थे टू कैरी आउट हिज ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी कर सके या उठा सके, राइट। अब यहां पे कहता है क्वेश्चन नंबर 8, कहता व्हाई डिड द हैंगमैन टेक ऑन द जॉब इफ ही डिडंट विश टू परफॉर्म हिज ड्यूटी।
हैंगमैन ने ये काम क्यों लिया अगर वो ये नहीं चाहता था कि वो ये ड्यूटी करे? द हैंगमैन वाज टेर अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट। वो कैपिटल पनिशमेंट के काफी खिलाफ था। He took on the job only to save one's life. उसने ये काम इसलिए लिया कि वो किसी की जिंदगी को बचा सके। The life of the prisoner, उस कैदी की जिंदगी, awaring to be hanged, जो लटकाने के लिए तैयार था या लटकने के लिए तैयार था या फांसी लगने के लिए तैयार था। On that particular morning, उस खास सुबह को। He knew, वो ये जानता था, that if he didn't do his duty, अगर उसने अपना फर्ज अदा नहीं किया, others wouldn't do it, दूसरे भी वो फर्ज अदा नहीं करेंगे, and so valuable life would be saved, और बहुत कीमती जान बच सकती है या बचाई जानी होगी या बच जाएगी, right? Question number 9 briefly state the hangman's view on the capital punishment. कहता है कि मुख्तसर तौर से हैंगमैन के जो व्यूज हैं, जो नजरिए हैं, वो बयान करें। The hangman is dead and he is thinking that capital punishment is not good. वो ये सोच रहा था कि कैपिटल पनिशमेंट अच्छी नहीं है। वो ये सोच रहा था कि इट वुड बी बेटर फॉर taking the responsibility on my shoulder, and then refusing to do so would save the life of an innocent person. Maybe possible he would be innocent, but the evidence against him is or in favor of him is telling that he is criminal and is be hanged is not so good. So that he wanna save the life of prisoners who, according to him, according to the hangman, the innocence of the prisoner would be exposed during the execution. और वो ये चाहता था कि पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट अच्छी नहीं है, और वो ये भी चाहता था कि जो मतलब इसकी इनोसेंस है वो एक्सपोज होगी जब इसको फांसी लगेगी। और उसने ये भी कहा कि when I will refuse or when he will refuse to do his particular job, the other would also refuse to do the particular job, right? So that यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, राइट? सॉरी, हम इस पे थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे। ये कहता है कि the hangman is dead against the capital punishment. He thinks that the criminals are not always rightly condemned. By refusing to execute the prisoner, he saves the life and saves himself from the embarrassment of doing a murderous duty. Other characters also disfavor the capital punishment. The jail officers do not do it. The chaplains also doesn't like it, and all of them are opposed to the capital punishment, and thus indirectly they support the hangman. राइट? अब ये कहता है कि हैंगमैन जो है वो डेड था कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ, और वो सोचता था कि क्रिमिनल्स जो है वो हमेशा उनको जो है कंडेम नहीं किया जा सकता है, और वो ये भी कहता था कि मैं जब एग्जीक्यूट से रिफ्यूज़ करूँगा और वो उसकी जान उस तरह से बची जा सकती है, और वो इस हैरानकुन काम को अपने सर इसलिए लेना नहीं चाहता था क्योंकि वो ये समझता था कि ये एक मॉरल ड्यूटी है। We have here question number 10. Question number 10 says, what does the hangman mean when he say, if it was a part of the law that judges and juries must be in at the death there and be more acquittal? कहता है इसका क्या मतलब है कि हैंगमैन जब ये कहता है
कि अगर ये पार्ट है कानून का, जजेस और जो जूरीज है वो भी इस मौत का हिस्सा होने चाहिए वहाँ, और वो भी बरी होने चाहिए. He means to say that most of the judgment given by the judges and the juries would be proved wrong. If they were to see the criminals hanged before them, they would feel sorry for their judgment. Moreover, the sight of the criminal hanged before them would horrify them. Thereafter, the number of hangings would be greatly reduced, and the judges and the juries would think several times before giving their judgment. इसका ये मतलब है कि बहुत सारे जज जो अपनी जजमेंट देते हैं और जो मतलब जूरी जो अपनी जजमेंट देते हैं वो हमेशा गलत साबित होते हैं अगर वो क्रिमिनल्स को हैंग करते हैं उनके सामने. वो ये फील करते हैं अपनी जजमेंट पे. इसके अलावा जो क्रिमिनल उनके सामने हैंग्ड हो जाते हैं या लटकाए जाते हैं वो डर जाते हैं. और इसके बाद बहुत सारे ऐसे जो मर्डरर्स होते हैं या मतलब फांसी पर लटकाए हुए होते हैं वो फिर रिड्यूस्ड हो जाते हैं, दिल शिकस्ता हो जाते हैं. जज और जूरीज जो है उनको सोचना चाहिए मतलब कहीं मर्तबा इससे पहले कि वो अपनी जजमेंट दें, अपनी राय दें. राइट. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 इट सेज explain one can't have much senses of humor left to become a hangman. अब कहता है इसको एक्सप्लेन करो कि एक जो है वो नहीं रख सकता है सेंस ऑफ ह्यूमर जो मतलब इंसान को बनाता है या जो बनाता है एक हैंगमैन. The new hangman is usually opposed to the capital punishment and he sees nothing good in the profession of a hangman. He calls his duty cruel, murderous, and inhuman. And hangman loses his honors the moment he joins the profession, and the society regards him as an outcast deserving no respect. Even his friends and relatives look down upon him. अब क्या कहता है कि हैंग्समैन जो है कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ है. वो कुछ भी नहीं देखता है उस अपने हैंगमैन के प्रोफेशन में. वो इसको बोलता है या वो अपने प्रोफेशन को एक जालिमाना फ़र्ज समझता है और एक कातलाना फ़र्ज समझता है और गैर इंसानियत समझता है और वो अपने तमाम इज़्ज़त को जो है वो खो देता है जब वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करता है. सोसाइटी जो मतलब उसको जो है एक इस हिसाब से देखती है कि उसका कोई जो है रिस्पेक्ट नहीं देती या उसको कोई इज्जत नहीं देती है और उसके फ्रेंड और उसके रिश्तेदार भी उसको बड़ी हकारत की नज़रों से देखते हैं. Hello, welcome to my channel. I'm Arviz and teaching you the English. Today I gonna start the unit. It's the last unit of Jammu and Kashmir Board of School Education, and it's the last unit. So in this unit we're gonna discuss the 18th unit. It's the play written by Laurence Houseman, and the name of the play is New Hangman. So it's a very popular play, so that it's one act, and we have to first here see the characters. Here we have characters Horde, Vada, and second Vada, third Vada, and Governor, and Hangman, and Chaplain. These are the characters here, and we have here 6 characters. So that we're gonna see here first scenes where it
you know, uh, has been, placed. It has been placed within the entrance to the prison is a sort of office containing a desk, an office, stools, a hanging clocks, and telephone. Along one wall stand a bridge, and everything is severely plain, ugly as well. For even the plain things in a prison must not be beautiful. And the office leads into a stone corridor, the door to which is now open, and it is early morning and winter, but the clock says 7:40 and it is still almost dark. A gas jet gives dull illuminations to the scenes into which the cold morning light gradually enters, and the second warder is speaking into the telephone and finishes just after third warder has entered. Second warder, yes, 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 right, bye. Third warder, has he come? Second warder, curiously, yes, he has come. Third warder, why do you mean? Anything the matter? Second warder, I don't know. He is cured. Third warder, drunk? Second warder, cautiously, I should say. And third warder, oh, a bit nervous, I suppose. Don't wanna doing it for the first time. You can't get used to something all at once. Second warder, he's being assistant before. Third warder, not the same thing. So have I, but I'm not used to do it. It says sorry. He drinks and hands his clocks. Second warden, still, it's got to be done. Once again he drank there. Third warden, would be if all those who say so had to take their turn at it. Second warden, their turn. Third warden, yes, touch a button, pull a lever, that's all it is at the last. Second warden, here comes the governor. As the governor enters, powered by the head warder, they spring to attentions and salute. Irritably, governor, irritably, well, we can't wait for that. Second wardener, no sir, that's where he said. Said you'd better go on, sir. Gardener, irregular, but oh yes, wedding would be horrible. Is it all ready? Head wardener, should be, sir. Tch, was all fixed up last night, sir. Gardener, yes, I mean, are we ready? Head gardener, yes, sir. Gardener, well then, he should be here. And the chaplain, where is he? Is he in the cell? Third wardener, no, sir. In the chapel, I think, sir, saying his prayer. Third wardener, no, sir. In the chapel, I think, sir, saying his prayer. Governor, better tell him the time, then
It's on the counter. Third Warner. I don't think he is likely to forget, sir, judging from the look of him just now. Gardner, upset. Uh, Third Warner. Didn't look? Not quiet himself, sir. Gardner, half to himself. Who can? I'd like to know. Head Warner. Very true, sir. The second Warder has made a move toward the corridor, but no turn. But now turn back to say. Second Warder. He's coming, sir. Now, sir. Governor. Who? The chaplain? The second warder. No, sir. The. It's the new one, sir. The hangman enters. He is youngish, with a thin face, slightly lined, dressed in black. He is the only one who is bareheaded. He carries his hat in his hand and presently has, laid it on the desk. Governor, oh, good morning, Hangman. Good morning, sir. Governor, is everything ready? Hangman, everything is ready, sir. Governor, your assistant? Where is he? Hangman, I haven't brought an assistant, sir. Oh, that's unusual, Governor saying here. Oh, that's unusual. Why not? Hangman, would be necessary, sir? Would be necessary, sir? It means wouldn't be necessary, sir. Right? Governor, you seems pretty sure of yourself. And this is your first time? Hangman, coldly. The matter is left to my direction, sir. Governor, oh, quiet, I'm not. Hangman, I have been an assistant myself, sir, but I shouldn't need one today. Second warder, assigned to third. He's cured, you know. Governor, to head warder. Brown, what sort of night has the prisoner had? Head warder, gravely, a bit restless, sir. He's saying in a gravely way, right? A bit restless, sir. Woke early, started to cry, didn't get to sleep again. Governor, had any breakfast? Had warder. Yes, sir, but he brought it all up again. Governor, poor fellow. No use to him anyway. Have you give him anything else? Head warden, yes, sir. I gave him 2 stiff ones. That made him feel better. The second one. Here he gonna say that I have given him the wine. First stiff was not wine of first stiff was not so good for him, and the second when he make him feel better. Governor, give him a third if he wants it. Head warder, yes. Very good, sir. He stands to go. Governor, and Brown, head warder, turn back. Yes, sir. Governor, just say with him yourself. Send
the other two out. It's it's not much anything you can do, right? Now, and you are more understanding. Do what you can. Head Warner. That's third ill. Do more for him now, sir, than I can. Gardner. Very well. Give it him. Had water. I Elsa Gardner. Make it as strong as you like. Had water. Understandingly. Yes, sir. The governor looks at the clock and then the watch. He moves restlessly about, then speaks. Governor, time's getting on. Thomas, you'd better call the chaplain. Second warder. I see him coming now, sir. Governor. The words breaks and sad. Good. Chaplain. Governor. I can't. I still know what I am about. I can't get away from myself. I have tried. Oh God, forgive. I am drunk, but it's not a bit of good. Governor, away from the warder. Godman, pull yourself together. Have you no sense of decency? You decency? You a clergyman? Chaplain. That's why I like this. You can't have decency when you are hanging a man. Second warden. To third warden. By God, that's true. Chaplain. I can't face. I can't. I am drunk enough. Oh, why did I come here? I'd never have taken the post. I'd now. If I thought this would happen, I can't face it. I tell you, Hangman, you need troubles. You wouldn't have to face it today. The governor turns about and instantly surprises the chaplain with a sort of miserable hopefulness. Chaplain. What? Not? Not that? Has there been a reprieve then? Hangman. There'll be no hanging today, sir, unless someone else take it on. Governor. Who know what you mean, man? Hangman. I mean, sir, that I'm not going to do it. Governor. Stupid. You aren't going to do it? Hangman. No, sir. I didn't come here today with any intention of doing it. Governor. Then what a devil did you take the job on for? For a joke? Hangman. Just for this, sir, you can't take it as a joke. If you like, just to see whether anyone else is willing to do what I wouldn't do ever again. So help me God. Governor.
Do I understand that you accept the appointment without any intention of uh, crying out the duty, Hangman? That's so, sir, Governor. You call that honorable? Hangman. No, sir. One can't have much sense of honor left to become a hangman. I lost all mine being an assistant. I was 12. I was at 12 hangings, sir. I wonder at how many you have been, Governor. Stiff-eyed. But this is the most unheard of things I ever, Hangman. Yes, sir. That's why I'm dying. I'm going to be hard now. Governor, trying to keep calm. Will you be good enough to explain? Hangman. What am I to explain, sir? Governor. Why, if you are such an objection to hanging, did you apply for the post? Hangman. I applied for it, sir, because I thought that by doing this I might save just one man's life and shame a few other from ever taking part again in such a dirty business. Chaplain. A little insincerely, but feeling he has a small duty to do. But do you realize that you are pulling all of us in a very awkward position? Hangman. Yes, sir, I do, sir. Chaplain. Then why? Hangman. But not such an awkward position as you are asking me to put someone else in. Governor. That's not our doing. That's the law. Hangman. Here Hangman saying, yes, the law made by human beings expecting others to do for him what they would want do themselves. If it's human beings, we are going to unmake the law. I'm making a start on my own, Governor, by getting yourself dismissed. Here Hangman saying, oh yes, that's fellow, of course. But there is not a music hall in Walnut, sir. Wouldn't give me £300 tonight just to stand up and be looked for at for a week. The hangman that wouldn't hang people at a Sunday paper would give me another 100 per an interview. All to it, sir. Well, sir, that's being so. I'm hoping that there is somebody I'll give me a cleaner job for a bit less pay. Governor. But man, you are mad. What on earth put such a thing into your head? Have you realized what trouble you are getting yourself into? Why you were prosecuted for this? Hangman. Can I, sir? Then it'll all help. No, sir, I'm not getting myself into trouble. I'm getting out of it. Easing my conscience. Sorry. I have been a martyr. Today I make a public confession. Governor. A martyr? You say?
Hangman, yes, sir. What else is a human but a man who murders to honor, for money, in cold blood? Dare you think a hangman does his job for love of society? He doesn't get any. He had he has to hide himself under a changed name. Decent man wouldn't know him. A decent woman wouldn't marry him. Nobody in my street know who I am. I got this job because for 5 years I'd been assistant to the last, knew the ropes. I suppose when one of them broke, we had to do it over again. That didn't get into the paper, though no appeared the last time I assisted. Assisted. We hanged a man who I believe was innocent. Others didn't. But if the jury had been made to come and see their verdict carried out, maybe they'd have thought so too. The truth should clears on the drop sometime then in witness box. If there was part of law that judges and juries must obey in at the death, and there'd be a quarrel, sir. They leave that to us. We finished the job for them, and they despise us for it. But they say it's got to be done.